Hello everyone, welcome to my YouTube channel Cognitive Coder. So today in this PySpark video series we'll learn how to use foundation function to convert the JSON string to struct type. Okay. In our earlier video, what we have learned that JSON string from JSON function we use करके how we can convert the JSON string into map type column. Okay. पर यहाँ पे देखेंगे how to convert it in a struct type column. Basically, this is the continuation of the last video. Okay. If you have not seen the last video, the map type how to convert it to map type column, please watch it first, then you will get to understand. Okay, so you will get the video, you will get the video here. Okay, uh, so in my channel, please go and watch it. So coming to our today's discussion, so we will do the handle and you will get clarified कैसे हम लोग ये स्ट्रक्ट टाइप को कन्वर्ट करेंगे. ठीक है, तो बेसिकली सेम डेटा पे मैं यूज करूंगा यहाँ पे. ऑलरेडी मैं लास्ट वीडियो में क्रिएट किया था. ओके, तो you have the data like this as a string json format data. Okay. पहले वाला कॉलम का डेटा नॉर्मल स्ट्रिंग में है और दूसरे वाले का स्ट्रिंग जेसन फॉर्मेट में है. अगर यहाँ पे भी सेम, अगर तुम्हें स्ट्रिंग ये जेसन का की वैल्यू एक्सेस करना है तो क्या करना पड़ेगा. पहले तो तुम मैप टाइप पे कन्वर्ट करके भी कर सकते हो और यहाँ पे स्ट्रक्ट टाइप पे कन्वर्ट करके भी हम लोग कर सकते हैं. यहाँ पे वही वाला देखेंगे कि स्ट्रक्ट टाइप पे कन्वर्ट करके कैसे किया जाए. I've already imported the struct type, struct fill and string type, and also integer type. I need to import because I need to work with integer also. So basically, what we have done in our earlier video, we are using the form JSON function for getting access on the this JSON string, and after that we are converting the column into a map type. Uh, uh, we are creating one new column, and there we are storing it. Okay. So here also we'll do the same thing. Okay. So we'll prepare the schema. Uh, as the schema will be a very long, just for the difference with the map type, we will do this same schema definition in outside of this. Okay. तो बाहर पहले हम लोग स्कीमा को डिफाइन कर लेंगे, बस यही डिफरेंस है. ओके, तुम लोग चाहते हो तो यहाँ पे भी कर सकते हो, तो मैं यहाँ पे बाहर कर लूँगा. ठीक है. स्ट्रक्ट टाइप. ओके, ये स्ट्रक्ट टाइप स्कीमा कैसे डिफाइन करना होता है मैं मेरा अर्लियर वीडियो भी बता चुका हूँ. इफ यू हैव नॉट सीन, प्लीज गो एंड वॉच माय अर्लियर वीडियो इन माय चैनल. यू विल गेट टू अंडरस्टैंड. ओके, यहाँ पे स्ट्रक्ट फील्ड को लो, उसके बाद whatever key you have. So we have the RAM key. Okay, what is the data type of this? It's a string data type. Okay, string. Okay, string type. String type I'm getting. No, I'm not getting. string. Now yeah. Okay. Okay, so now we'll define once again struct field. तो कॉपी करते हैं, पेस्ट करते हैं. यहाँ पे चेंज इट टू स्टोरेज. स्टोरेज ये वाला है इंटीजर. ओके, हो गया. So now what we'll do, simply we'll add it here.
in place of map type. Okay, now let's run it. Let's see. In block we are getting this factor. Okay, so the very simple method. Okay, now we can directly access the en value of the total. Now अगर तुम यहाँ पे इसका उनके only RAM access करना चाहते हो तो बस यहाँ पे df1 dot with column function का use करो with column then उसमें give the RAM name के बाद जैसे हम लोग पहले भी कर चुके हैं उसके बाद df1 dot properties को कॉल करो यहाँ पे उसके बाद रैम को लेना चाहते हो तो बस यहाँ पे properties I think state let me check. Oh, sorry, I should mention here the prop because my new column name is prop, not properties. Okay, so instead of properties, we need to mention we call the prop column. Okay, for getting the data. That was my mistake. That's typo mistake. I can click. So now we can extract the RAM. Okay, if you want to do the same thing for the for storage also, what we will do here, just call it the storage. We'll change it. I don't know why I'm doing that. So in this way, you can also use this from JSON function to convert the JSON string to struct type. Okay, I have you understood the concept. If you have any doubt, please do comment on this video comment section. I will try to answer you all the questions. Okay, I will try to clear your doubt also. Okay, thank you for watching my video. If you think that videos are very much useful, please go to my channel and see all those videos. Okay, and please do like, share, and comment. Okay, please subscribe our channel. Okay, please support us. You guys support is very much required for growing this channel. Okay, thank you for watching our video. Bye.